So first I am talking about small intro of cement. Cement is a binding material which is used to bind the structure member for building pavement, bridges, tunnel, etc. सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, उसका यूज बिल्डिंग, पेवमेंट, ब्रिजेस, टनल, रोड बनाने में किया जाता है. Now I am talking about the invention of cement. So cement is invented by Joseph Aspedian, UK in 21st October 1824. He named it Portland cement. सीमेंट जो है वो इन्वेंटेड किया है ब्रिटिश साइंटिस्ट जोसेफ एस्पेडिन ने. उन्होंने 21 अक्टूबर 1824 को सीमेंट इन्वेंट किया है और उसका नाम दिया है पोर्टलैंड सीमेंट. In India, the production of cement started तमिलनाडु in 1904. इंडिया में सबसे पहले सीमेंट तमिलनाडु में 1904 में प्रोड्यूस किया गया. Now, how to manufacturing of cement? There are two methods of manufacturing cement. First one is dry process method and second one is wet process method. In that, we have talking about the first method is dry process method. In dry process method, we have to choose two raw material. First one is lime and second one is clay. Lime is calcareous material and clay is argillaceous material. In that type of raw material, that is lime and clay, are crushed, dry and fed with its correct proportion in grinding mill, where they form with a very fine powder, and the powder is formed is known as raw mill. The raw material is further blended and correct composition in compressive air. After the aerated powder tends to behave like almost liquid, about the 1 hour of aeration is uniform mixture is obtained. Now the next step we can do, the blended mill are sieved and fed into the rotary kiln for burning at 1300 degrees Celsius to the 1500 degrees Celsius. After the burning, they form clinker. This clinker are put in ground at ball mill for cooling the clinker and added 3 to 5% gypsum for increase the setting time of cement. Now, after cooling clinker are stable in silos like different chamber. Then the cement packed into packing units of 50 kg cement bag and it is used for construction purpose. This is the dry process method of cement. सो अब हम लोगों ने देखा ड्राई प्रोसेस मेथड. एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूँ. सो सबसे पहले हमने दो मटेरियल लिए. फर्स्ट वन इज़ कैलकेरेसियस एंड सेकंड वन इज़ अर्गिलेसियस. सो कैलकेरियस में हम लोगों ने पहला दिया लाइम और अर्गिलेसियस में हम लोगों ने लिया क्ले. फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको क्रश किया और उसके बाद उसको स्टोर किया. उसके बाद जो हमारे दो रॉ मटेरियल है, पहला है लाइम, दूसरा है क्ले, दोनों को ब्लेंडिंग किया विद कॉम्प्रेसिव एयर में. उसके बाद उस ब्लेंडेड मिल्क को सीव करके उसको रोटरी किलन में बर्न करने के लिए रख दिया एट द टेम्परेचर ऑफ 1300 to 1500 डिग्री सेल्सियस. रोटरी किलन में बर्न होने के बाद जो ब्लेंडेड मिल्क था वो कन्वर्ट हो जाएगा क्लिंकर के फॉर्म में. क्लिंकर इज नथिंग बट ऐश. उसके बाद उस क्लिंकर को बॉल मिल में ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है और उसमें 3 से 5% जिप्सम डाल दिया जाता है फॉर इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ सीमेंट. अब क्लिंकर ठंडा होने के बाद उसको डिफरेंट चेम्बर में रख दिया जाता है और उसी को हम कहेंगे साइलोस. साइलोस में जाने के बाद अब हमारा सीमेंट रेडी हो चुका है. उसके बाद हम उसको पैक करेंगे डिफरेंट पैकिंग बैग्स में. यहाँ पे हमारी ड्राई प्रोसेस मेथड खत्म होती है. सिमिलरली हमारी वेट प्रोसेस मेथड भी ऐसी है, बस इसमें मटेरियल को वॉश किया जाता है. नाउ वी हैव टू टॉक द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट. नाउ द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज लाइम. The molecular formula of lime is CaO. The percentage of lime in cement is 60 to 67%. Lime gives the strength of cement. Second is iron oxide. The molecular formula of iron oxide is Fe2O3. The percentage of iron oxide in cement is 0.5 to 5%. It provides color, hardness, strength. It helps fusion of raw material. Third is magnesia. The molecular formula of magnesia is MgO. The percentage of magnesia in cement is 0.1 to 3%. It provides color and hardness. Fourth is calcium sulfate. It is nothing but the molecular formula of calcium sulfate is CaSO4. The percentage of calcium sulfate in cement is 3 to 5%. Calcium sulfate is increase the setting time of cement. Fifth is alumina. The molecular formula of alumina is Al2O3. The percentage of alumina in cement is 3 to 8%. It is also increase the strength of cement. Sixth is alkali. The molecular formula of alkali is Na2O plus K2O. The percentage of alkali in cement is 0.4 to 1.3%. It is an impurity. If it is excess, it causes void patches efflorescence. Then the last second, 7 number, silica.
The molecular formula of silica is SiO2. The percentage of silica in cement is 17 to 25%. And last is sulfur trioxide. The molecular formula of sulfur trioxide is SO3. The percentage of sulfur trioxide in cement is 1 to 3%. It should be small quantity of cement. It makes cement unsounded. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस सीमेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं।